that relation of energy in SHM was in terms of x, position के terms में थे, है ना? Now we can see the relations of energy in terms of time. Time के साथ energy का variation, how will it be? So let's see kinetic energy first. Okay, do we remember this? Displacement is given by this relation in SHM and velocity is given by this relation in SHM. Okay. So now this we are going to put in the velocity and displacement. So we know kinetic energy is half mv square. V की value ये put कर दीजिए. So it will become half m omega square a square and cos square omega t. ठीक है, तो m omega square को k भी लिख सकते हैं ना. We know this already, we have done many times. Kinetic energy relation is this, whereas potential energy is given by half kx square. x की वैल्यू पुट कर दी है ये वाली और स्क्वायर कर देंगे, एंड अगेन दिस इज कमिंग हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. दोनों ऐड कर देंगे, वी गेट द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी. हाफ के एक्स स्क्वायर इज टेकन आउट, ये इसमें से बाहर ले लिया, and it is left with sin square omega t plus cos square omega t. That will become 1. The total energy is this much, half k square, same as that of the previous case. Do you remember क्या थी? Previous case में भी same आई थी total energy. K की value हम m omega square भी put कर सकते हैं, a square. So this already we have seen. Constant, ठीक है, बट ग्राफ इसका देखना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में. Earlier it was in terms of position, now it is in terms of time. Can you predict kinetic energy का ग्राफ कैसा आएगा? It is function of cos square omega t and sin square omega t. तो sin and cosine में minus, it goes in the minus side also, but since it is square, minus will become plus. Sin का देखो ऐसा होता है, like this, but sin square का कैसा होगा? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा वो. This will be just vanishing like this. Cos में भी it will become plus, minus term will become plus. So that's how graph will come. It is our NCERT book diagram. Energy is shown on the y-axis and on x-axis time is shown. तो kinetic energy देखते हैं, t is equal to 0 में kinetic energy will be 0, sin function है. It will start from here, goes like this, kinetic energy will go like this. And if it is sin function, it comes down. Sin function होगा तो नीचे आएगा. But since it is square, so therefore it will go up again. Minus will become plus. So it will oscillate like this. ये half oscillation था उसका, और जो negative वाला oscillation ऊपर की तरफ चला गया like this. तो oscillation repeats from here itself. यहाँ से repeat हो रहा था. One oscillation of kinetic energy, again one oscillation of kinetic energy. So kinetic energy is oscillating fast now in one time period, जो t होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, उसमें 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए, है ना. देखो साइन फंक्शन गोज लाइक दिस, बट साइन स्क्वायर फंक्शन कम्स लाइक दिस. 2 ऑसिलेशन हो गए, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. ये फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉर्मल साइन फंक्शन की, और kinetic एनर्जी की 2f हो गई. तो kinetic एनर्जी ऑसिलेटिंग ट्वाइस फास्ट. सेम इज पोटेंशियल एनर्जी आल्सो. पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कॉस है, देखिए कॉस t इज इक्वल टू 0 पे कॉस मैक्सिमम होता है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, कम्स डाउन, फिर ऐसे ग्राफ जाता है, इट गोज लाइक दिस, है ना. तो दिस विल माइनस विल बिकम प्लस, ऐसे हो जाएगा, एंड लाइक दिस. तो इट इज आल्सो ऑसिलेटिंग ट्वाइस फास्ट. स्क्वायर होने से फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल. गेटिंग? तो दिस वन इज, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी में कॉस था क्या?
यस, काइनेटिक एनर्जी में कॉस है, तो कॉस जो है फंक्शन मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में साइन है, साइन में 0 से स्टार्ट होता है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ब्लू वाला पोटेंशियल एनर्जी का, गॉट इट। So this is given in our NCERT book. Can you see whole thing? End result is same. Only variation is this with respect to time here. Earlier it was with respect to position. आ रहा समझ में? तो ये एंड में सेम आया, बट यहाँ पर cos एंड साइन की फंक्शन में टर्म्स में है। एंड कांस्टेंट देखो, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट अगेन, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। तो रेड वाली जो लाइन ऊपर मैंने ड्रॉ की है, दैट इज टोटल एनर्जी, दे आर इंडिकेटेड। ई मीन्स टोटल एनर्जी, which is sum of kinetic energy plus potential energy, which are varying with respect to time t. So this is also given in textbook. So you are supposed to know both the relations. ठीक है, हो जाएंगे, समझ में आ गया ये? Are you there? Yes, sir. So you can just take down this. You know, why are you joining so late? Why can't you join in time? All right, this is okay. Sometimes they ask the question like this, particularly in competitive examination. Particle execute simple harmonic motion with a frequency f. The frequency with which its kinetic energy or potential energy oscillate is already, this point has been discussed. इसकी जो frequency है, particle is oscillating with the frequency f. Displacement की frequency देखो यहाँ पर ये sin function है, तो ऐसे आएगा sin function, है ना? Velocity का function भी cosine function है, but this is becoming square. Square होगा तो I told you it will just turn, negative side will become positive. So this is completing two oscillation. A sine function, when the sine function complete one oscillation, this complete two oscillation. Frequency of kinetic energy and potential energy will become double. So 2f is the answer. टाइम पीरियड आधा हो गया, तो हाफ टाइम में इतने टाइम में रिपीट हो रहा है वो, एज कंपेयर टू दिस, इसका जो फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल। गॉट इट? व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? Which is never asked. This question is never asked, but I am asking you. ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते. Why it is not asked? Because it is constant. Constant means time period infinite. It is not repeating itself. The frequency is zero. तो frequency zero हो जाएगी. It is not oscillating at all. Zero oscillation per second. Total energy is not oscillating. It is constant. So zero oscillation per second. Got it? Yes, sir. ठीक है, तो this is important question, frequently asked question. So we have seen both the relations for total energy, that is mechanical energy in SHM. Now we are switching on to the simple pendulum, which is again very important topic. Simple pendulum का देखो, simple pendulum is कितना लेट ज्वाइन करते जा रहे तुम लोग हैं. I will close the meeting next time onwards. 5 पे मैं बंद कर दूंगा मीटिंग. Clear to
Those who are joining so late, Yes, sir. tomorrow onwards, if you are late, you will miss the class, whole class. Okay, because simple pendulum is nothing but a heavy point mass connected to the light string and oscillating. Pendulum, with the help of simple pendulum, we can find out the acceleration due to gravity. Pendulums are used in the old wall clocks and so on. Okay. So let's see how to get the time period of simple pendulum. Before that, just we will see what is the angular SHM. प्रीवियस जो हमने डेरिवेशन किए देवर ऑल लीनियर एसएचएम, जिसमें हमने रिलेशन यूज किया था ये वाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट द ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. सिमिलरली इफ ऑब्जेक्ट ऑसिलेट मेक सम एंगल, जैसे पेंडुलम है, इट इज मेकिंग सम एंगुलर एट मीन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट. इधर भी एंगल बनना, इधर भी एंगल बनना, ऐसे it is to and fro motion, but it is at some angle. So in that case, we call it angular SHM. Now same relation can be changed in terms of angle. Here it will be angular acceleration, here it will be angular displacement, but angular frequency वो already angular है, तो उसको कुछ change नहीं करना है. But acceleration will be made angular, displacement will be made angular, which will be angular acceleration का representation क्या होता है, alpha. Angular displacement is represented by theta. So now we'll bring this type of relation. Coefficient of theta will be nothing but omega square. अगर हमें omega मिल गया तो 2 pi by t is equal to 2 pi by omega. से time period मिल जाएगा, उससे frequency मिल जाएगी. If we get this thing, so we get the time period. All right. So now we are dealing with the simple pendulum which make the angular SHM. ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो हाउ टू गेट द अल्फा, लेट्स सी, लेट्स डू इट. ठीक है, देखो, दिस इज योर पेंडुलम, you just swing it one side at certain angle theta. Theta should not cross 10 डिग्री. लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो थीटा जो है इट शुड नॉट बी more than 10 degree, because small angle approximation is used. Sin theta को theta कब लिख सकते हैं, जब वो less than 10 degree हो. If it is bigger angle, then we cannot write sin theta is equal to theta. So small angle 10 degree this side, 10 degree this side. Don't oscillate more than that. Let m be the mass of the bob of the pendulum. This is called point mass, is called bob of the pendulum. L is the effective length, point of suspension से center of the bob तक, distance between point of suspension and center of mass of the bob. वैसे तो वो point mass है, but in case if it happen to be bigger mass, तो उसके center से लेना है, center of mass से distance लेनी है. So that is called effective length. That is called effective length. Center of mass से measure करेंगे if it is extended body. All right. Now let's get the relation. ये वाला relation चाहिए हमें. कौन सा? अल्फा, ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए हमें, है ना. तभी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड मिलता है हमेशा. हमें ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाता है. तो हाउ टू गेट दिस? टॉर्क के दो रिलेशन यूज करने वाले हम लोग. एंगल बराबर इट इज इक्विवेलेंट टू द सम पार्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन. तो टॉर्क के दो रिलेशन. टॉर्क का रिलेशन याद है आपको? फॉर्मूला बताओ. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. और ये कौन से रिलेशन से आता है?
आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर लेने वाले हैं। देखो तो कौन सा फोर्स इसको टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखो मास mg है, इसका ये वाला कंपोनेंट उसको टर्न करा रहा है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर फोर्स एंड r विल बी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो r will be L, perpendicular force will be mg sin theta, that is turning the pendulum. That should be equal to I alpha. That's all. These two relations are required to be equated and we get the omega. So let's see this one जो आपको बताया मैंने. First relation is this, restoring torque. तो ये जो mg sin theta है mean position की तरफ, ये restoring torque है, that comes from the r into f perpendicular. R is nothing but a length, ये इतना लेंथ हो गया उसका, और रेडियस हो गया टर्निंग का. F perpendicular is component of weight perpendicular to the length, so that is mg sin theta, ये वाला. So this is the torque. Why we have used minus? Minus sign means restoring torque tends to reduce the angular displacement. Angular displacement किधर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है. Torque किधर है, इस तरफ है. दोनों opposite है. So therefore torque will tend to decrease the angular displacement, or we can say both are opposite direction. Theta and ये opposite है, इसलिए minus आ गया. Anyway, both the logics are okay. Torque tends to decrease the angular displacement. Other relation will come from tau is equal to I alpha. Both will be equated. Alpha का relation मिल जाएगा x theta के terms में. Now you see from Newton's second law of rotational motion, Newton's second law of rotational motion, यहाँ पे मैंने rotational motion नहीं लिखा. Tau is equal to I alpha. Equating 1 and 2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. लेफ्ट साइड में I alpha आ गया, राइट साइड as it is, that comes from equation 1 and 2. For a small angle, sin theta will be theta. I told you theta should be less than 10 degree. That you have to keep it in mind when you do the experiment. Otherwise, your result will not match with this formula. तो sin theta को theta लिख दिया और I को नीचे भेज देंगे तो ये रिलेशन मिल गया. This is angular SHM. कौन सा SHM है? Angular. So this has to be omega. Whole thing has to be omega square. Since alpha is equal to minus omega square theta, so this whole thing has to be omega square. So omega will be under root of this thing, and omega is equal to 2 pi by t होता है. Right side में as it is, cross multiplied and got the value of, नहीं, उसके बाद I की वैल्यू पुट कर दी. This is the point mass. Point mass is oscillating about this. Point mass is turning like this. ऐसे point mass ऐसे सर्कल में टर्न कर रहा है. So this will be R, this will be M. So I will be mr square. R की जगह L लिखना पड़ेगा. R will be equal to L. तो यहाँ पर mr square will be equal to ml square. तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. This thing, ये I है, यहाँ पे पुट कर दिया. Mass getting cancelled, one length getting cancelled. तो L by G. क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे अभी. L by G. Frequency will be reciprocal of this. 2 pi and under root L will go in denominator, G will come in numerator. Frequency लिखना तो सबको पलट दो, interchange कर दो, numerator and denominator. This pendulum is, time period is independent of mass of the bomb. M पे depend नहीं कर रहा. You can take the heavy mass, a light mass. Time period will be remaining same. Got it? So that's how you have to do the derivation, which is important. Can you see? क्या किया हमने? टॉर्क के दोनों रिलेशन लिखे, इक्वेट कर दिया, एंगुलर एसएचएम से कंपेयर कर लिया, ओमेगा मिल गया,
ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, राइट साइड में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का m into r स्क्वायर होता है, r is nothing but l, some terms getting cancelled, cross multiplied and solved it for time period which is 2 pi under root l by g. If L is large, time period will be large. If L is small, time period will be small. Short pendulum will oscillate fast. अगर हमने pendulum की length छोटी कर दी, it will start oscillating faster. Got it? अगर mass बढ़ा दिया तो no change, independent of mass. If you carry out the experiment at moon, what will be effect on time period? G goes down, time period goes up. Slow down हो जाएगा. Restoring force कम हो जाता है तो धीरे धीरे oscillate करता है. If restoring force is more, it will oscillate faster. Got it? Any difficulty here? बोलिए कुछ पूछना है आपको? This is most important derivation. No, sir, no difficulty. Okay, you can note down. We will see some more points related to simple pendulum. For example, what is the answer of this question? Chalo. Niche, can you see? Can you see Yes, this sir. question? Niche. बोले क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर आ रहा है बोलिए? Yes. Rank the masses according to the time periods of pendulum, greatest first. इसको सिंपल पेंडुलम कर लेते हैं. सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको करना है. सिंपल पेंडुलम. ओके, एक मिनट जो होल्ड है इसको क्वेश्चन को लेट अस सी इफ ये क्वेश्चन थोड़ा सा properly worded नहीं है. Question is like this: if we have the simple pendulum having the bob of mass, these one, and length of the pendulum is same, so what will be the time period? It will be same for all. थोड़ा सा this question is misplaced actually ये, but इसका भी फिजिकल पेंडुलम का भी सेम आंसर होता है. फिजिकल पेंडुलम अपने कोर्स में नहीं है. इनफैक्ट तो mass, if we double the mass, in other words, if we double the mass, what is the effect on the time period? No change. All will, but provided they should have same effective length, length should not change, time period will be not depending upon the mass. Okay, this question you just leave it, cut that question. Next question is, my first question is, find the angular frequency of simple pendulum. Angular frequency of simple pendulum निकालना है, ओमेगा निकालना है. ऑलरेडी ओमेगा मिल चुका है वहां पर.
फिर भी दोबारा से निकाल लेते हैं हम। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। टी कितना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई √L/g। 2 पाई गेटिंग कैंसल, तो g/L। तो सिंपल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज g/L। Is it constant? Yes, it depends upon the length. If you don't change the length, it will be constant. Generally, pendulum की length change नहीं होती, जो है वो उतनी रहेगी, unless you do it, है ना? And g acceleration due to gravity, that is also not changing at any place, by, है ना? So you can just write constant. So angular frequency is constant. What about angular speed of the pendulum? Angular speed of pendulum is constant. Angular speed भी ओमेगा से ही डिनोट करते हैं, डू यू नो? Angular speed is also denoted by omega d theta by dt. Extreme point पे angular speed 0 हो जाती है, whereas angular frequency is not 0. Angular frequency is the okay, ठीक है, तो समझ में आ गया. Angular frequency is constant, whereas angular speed will be 0 at extreme point, which both are denoted by omega. You should know this. ठीक है, all right. आपको समझ में आ रहा है? Are you there or not? Yes, sir. Yes. Now suppose simple pendulum is inside the lift or inside the car, then car is accelerating or lift is accelerating down or up, car is turning, है ना? तो g की जगह net g लिया जाएगा, net acceleration, because there will be more than two forces. एक तो gravity का force तो रहेगा ही, that g will be there, and other force will be vectorly added, तो net g निकलना पड़ेगा. For example, one question is there in NCERT book, car is turning and उसके rooftop में एक pendulum connected है, what will be the time period? So let's do that. वहाँ पे g net निकालना है. If both are in same direction, they will be added up, है ना? मतलब वहाँ पर you have to see net acceleration due to gravity. Let's see, net g बोलेंगे, net force, net g से मतलब net force, उससे net acceleration आएगा. तो देखिए ये क्वेश्चन है. Simple pendulum of length L and having the bob of mass m suspended in a car. Car is moving on a circular track of radius r with the uniform speed v. If the pendulum makes small oscillations in the radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? मतलब देखो उसका एक तो जी नीचे है और कार अगर टर्न हो रही है तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वन मोर जी विल बी देयर. कार के अंदर से जब हम बैठ के बनाते हैं देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं उसमें. फॉर एग्जांपल देखो, यू आर इनसाइड द कार, यू फाइंड दैट, ओके लेट मी रिमूव दिस, इट इज नॉट रिटन प्रॉपर्ली. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी एक नीचे, कार जब इधर टर्न ले रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी दिस साइड v²/r विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर हम आउटसाइड से देखेंगे तो इधर लगाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, जो कि टेंशन विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. बोथ आर ओके. इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द कार यू हैव टू टेक द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये आपको दो, दिस इज वन एक्सीलरेशन, दिस इज अदर एक्सीलरेशन. नेट जी कितना होगा, 90 डिग्री पर है दोनों, तो 90 डिग्री पर √a² + b². तो a is g, other acceleration is centrifugal.
और सेंटीपिटल दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो विच विल बी v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी नेट। तो जी नेट की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइड बाई नेट एक्सीलरेशन विच इज अगेन अंडर रूट में 2 बार अंडर रूट आ रहा है ना, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट। पेंडुलम कहीं यहाँ पर सेटल हो जाएगा दो फोर्सेस के अगेंस्ट में, पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे कहीं पे हो जाएगी। एंड रेडियल ऑसिलेशन मींस आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा एंगल पे सेट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट यू टर्न इट। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर? एक्सीलरेशन will be vector sum of the two accelerations, one is downward, other is horizontally outward. Clear? Yes. टू वेक्टर्स जब ऐड करते हैं तो लास्ट वाला टर्म 90 डिग्री पे वो cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो लिफ्ट में भी जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी नेट विल बी जी प्लस ए हो जाता है, जब लिफ्ट नीचे आती है जी माइनस ए हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ से बनाना पड़ता है वो इक्वेशन, तो वहां पे इक्वेशन हम बना के नहीं डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो अच्छा, कैपिटल आर दिया, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर है, अलर्ट। देखो देखो acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7. What is the time period of simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of the earth is this? तो लेंथ दो इक्वेशन बना दो, डिवाइड कर दो, लेंथ विल गेट कैंसल, या फिर फर्स्ट इक्वेशन से लेंथ निकाल के इसमें पुट कर दो, है ना, तो यू विल गेट द टाइम पीरियड। कैन यू डू योरसेल्फ, ये एटलीस्ट खुद कर लो, ये कर दूं। मेक द टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से एल निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2 पाई एंड एल विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट द रिलेशन लाइक दिस, t1 by t2 is equal to अंडर रूट ऑफ l by g1 by g2। बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मून पे इतना व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सरफेस पे 3.5 ले लो, मून पर निकालना है, अर्थ का जो है अर्थ पर 9.8 है, मून पर 1.7 है, सॉल्व कर लो इसको, t2 विल कम 8.4 सेकेंड। ठीक है, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ना डिवाइड करने से। देखो व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जब लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या होता है, जस्ट लेट मी राइट अगेन। देखो जी नेट कैसे लिखेंगे, मैंने बताया नीचे जब जाएगी जी माइनस ए हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से निकालना पड़ेगा। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जी माइनस जी तो 0 हो गया, टी विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, जी नेट तो 0 है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ गया, मतलब इट इज टेकिंग इनफाइनाइट टाइम टू ऑसिलेट, इट मींस इट इज नॉट ऑसिलेटिंग एट ऑल। आपने थोड़ा सा साइड में करके छोड़ा तो वो वही उसी पोजीशन पे नीचे आ गया, उसने ऑसिलेशन ही नहीं किया, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी 0, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 upon infinity will be 0, so 0 frequency per second, it means not oscillating,
टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में या फिर सैटेलाइट में नो रिस्टोरिंग फोर्स, देयरफॉर पेंडुलम विल नॉट